अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज जनाब सैयदा खातून जन्नत का सालाना उर्स है। पहले तो सालाना उर्स की दलील आपको समझ जानी चाहिए, क्योंकि आले बिदत उर्स को बिदत कहने की ट्राई करते हैं, मगर ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा शामी ने शामी शरीफ के अंदर लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हर साल के ख़ात्मे पर जब वो दिन आता था जिस दिन में सहाबाए किराम ने शहादत उज़्मा की दौलत पाई थी, उनके मज़ारात पर बमे अपने दोस्तों के जाते थे। एक तो दिन की पाबंदी करना इससे साबित हुआ, दूसरा साथियों को साथ ले जाना, इससे मुराद इख्तिफाल है, जिसको मनाना कहते हो। यानी मनाते थे, अकेले को होते तो फिर सिर्फ ज़ियारत होती, जब साथियों को भी ले जाते थे फिर इसका मतलब यह है उसका मुराद इख्तिफाल था, उसको मनाना मुराद था। और फिर वहाँ जाके कलिमात तय्यबा पढ़ के उनकी अरवाह को ईसाल करना, इससे ईसाले सवाब भी साबित हुआ। और सालाना वक्त की पाबंदी के साथ उस रस्म को अदा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह के पाक लोगों की यादें ज़िंदा रखनी चाहिए। मैं आज इस ज़ौक़ में था कि खातून जन्नत की ज़ुबान अरबी है, आज की तकरीर अरबी में करूँगा, लेकिन सारे सुनने वाले पाकिस्तानी हैं तो अरबी में तकरीर करूँ तो समझेगा कोई नहीं। हैं जी, बादल अरब दरबूली फ़ूनन वकल्लफ़ूनी अन उकल्लिमा अला मुनासिबत सय्यदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुल आलमीन फ़ी लुग़तिल अरबिय्या लिअन्नहुम युसज्जिलून खिताबी व मुहादरती। सज्जिलून में रिकॉर्ड करते हैं, युसज्जिलून मुहादरती नखनु इज्तमाना हिना लिइख्तिफ़ालिना अला मुनासिबत उर्स सय्यदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह है वजूह शराफत कान मिनल अब और मिनल अम और मिनल ज़ौज और मिनल औलाद फ़हाज़िहिल वजूहुल अरबा नहनु नतकल्लमु फ़ीहा इंशाअल्लाह अना उरीदु अन उफ़ाहिमकुम व इन कुन्तु अतकल्लमु बिलुग़तिल अरबिय्या वलाकिन अना उसाइलुल कलाम लितफ़हीमिकुम इंशाअल्लाह मिन जानिबिल वालिद वालिदुहा अबूहा सय्यदुल आलमीन फिद दुनिया वल आखिरा फिल मौजूदात मुमकिनात मखलूकात व कुल्लु शै गैर रब्बुल आलमीन हुवा मालिकु कुल्ल दुनिया फिद दुनिया वल आखिरा मिन खैसु अन्नल वलदा जुज़उन मिन वालिदिही फलिहाज़ा युहकमु अलैहि हुक्मुल वालिद
कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम सूरह ज़ुख़्रुफ़ और आयत रकम 15 वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़ा इन्नमा क़ालल कुफ़्फ़ारु इन्नल मलाइकता बनातुल्लाहि सुब्हानहु व तआला फ़क़ाल लिरद्दिहिम जअलू लहू जुज़अन मिन इबादिही जुज़ा बमाना इन्नहुम इत्तख़ज़ू अज्ज़ाई अना तय्यबुन ताहिरुन मुनज़्ज़हुन अनिल अज्ज़ाई अना लस्तु बिमुतजज़्ज़िइन फलिहाज़ा ला युमकिनु ली अन अकूना वालिदा अख़दिन अल मलाइकतु हुम इबादुर रहमान हुम इबादुन मिन इबादिर रहमान हुम याबुदूननी व वलद ला याबुदु वालिदहु अना लस्तु बिवालिदिहिम अना लस्तु बिवालिदिहिन्ना हुम मलाइका हुम इबादुम मुकरमून अना लस्तु बिमुतजज़्ज़िइन लिमाज़ा अना इलाहुन अना ला अतक़ब्बलु तजज़्ज़ी अल जुज़उ फ़ी हुक्मिल कुल्लि वलौ कान ली बिन्तुन औ बिनातुन औ वलदुन लकान हुवा इलाहुन लिल मखलूकात लिअन्नल जुज़अ फ़ी हुक्मिल कुल्ल हैसो अन्ननी वाहिदुन ला शरीक ली फलिहाज़ा ला अत्तख़िज़ वलदन मा कान ली वलदुन वला यकून ली वलदुन फ़ी ज़ौइ हाज़िहिल आया नहनु नस्ल इला नतीजतिन आलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज्ज़ाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नल कुरान क़ाला वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़ा इज़ा कानल अज्ज़ा मुमकिनन लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला व काना मुतजज़्ज़िउन हैसो अन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला लैसा बिमुतजज़्ज़ी वलाकिन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा मुतजज़्ज़िउन अन सय्यदा फ़ातिमा कानत जुज़उ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलिहाज़ा युहकमु अलैहि बिहुक्म वालिदिही बिहुक्म अस्लिही कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादहू ला शरीक फिल मखलूकात मुमकिनात मौजूदात फ़ी नौइही कज़ालिक सय्यदतुन निसा ला मिसाल लहा फ़िद दुनिया वल आखिरा फ़ी नौइही फ़ी नौइन निस्वानियत लैसा लहा शरीकुन वला अदीलुन वला मसीलुन सय्यदतुन निसा फ़ी हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़िहि नाइया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल इन फ़ातिमा बदअतुम मिन्नी व इन कानत उखरो बिनातिही जुज़उ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन सय्यदतुन निसा फ़ातिमा लहा इम्तियाज़ुन फ़ी अख़वातिही सुभान अल्लाह सुभान लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला हिया बदअतुम मिन्नी बदअतुम मीन्स बमाना क़ितअतुन मिन क़ल्बी व इन कानत आखिर औलादिही कानत अज्ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन्न फ़ातिमा लहा ख़ुसूसियतुन ताम्मतुन ला शरीक लहा मिन औलादि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मर्तबतिहा या कानत ला शरीक फ़ी अख़वानिही लहू मर्तबतुन उज़्बा लहू उलियतुन ताम्मा लैसा लहा शरीकुन फ़ी मर्तबतिही फलिहाज़ा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रज़ियहा फ़क़द रज़ानी व मा रब्बानी फ़क़द रब्बानी कुल्लु शै युर्दी सय्यदा फ़ातिमा युर्दीनी व कुल्लु शैन यग़दिबुनी बमाना सय्यदा फ़ी हुक्म नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दी नो फ़ी नौइल निस्वानिया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फ़ातिमता अक़सनत फ़रजहा फ़हर्रमल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन नार सय्यदा फ़ातिमा उम्मु आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हदीस फ़ी तबरानी
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअल ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही व जअल ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अलीय्यिन व क़ाल बाद कुल्लु बनी उम्मन यंतबूना इला असबतिहिम इल्ला वुल्द फ़ातिमा अल हसन वल हुसैन फ अना असबतुहुम फ अना अबूहुम बमाना कमा यलिदुहा सय्यदा फ़ातिमा हिया फ़ी हुक्म मिन्नी कमा अना अबूहुम हिया उम्मुहुमा वलौ काना औलादा उखरा बिनाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना सय्यदुन लिअन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसबा बिन्त अबनाए रसूल अबनाए फातिमा इला नफ्सी वक़ाल अना अबूहुम फ अना असबतुहुम हम औलादी वलाकिन लम यकुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकज़ा फ़ी उखर औलादिहा बिनातिहा वलौ कानत लहुन्ना औलादुन बिनातुन मा कानत सय्यदा फ़क़त औलाद फ़ातिमा हिया सय्यद हम सय्यदून वला शरीक लहुम फ़ी ज़ियादतिहिम सुभान अल्लाह हुवा ला शरीक लहु फ़ी दुनिया वला फ़िल आखिरा इज़ा जा यौमल क़यामत क़ील मिन जानिबिल्लाहि सुब्हानहु व तआला लिआलिल मशरे नक्किसू रुऊसकुम वक़ुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फ़ातिमतु अला सिराते फ़ी सबईना अल्फ़ा हुरन मिनल जन्ना नक्किसू रुऊसकुम मीन्स नक्किसू रुऊसकुम मीन इक़फ़दू रुऊसकुम ले अज़मते सय्यदतुन निसा जमीउल अंबिया मामूरून यौमुल क़यामत अन युनक्किसू रुऊसहुम बमाना सय्यदा फ़ातिमा फ़ी हुक्म सय्यदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नल अंबिया मामूरून लिल इन्हिना मीन्स बो डाउन लिल इन्हिनाए फ़ी मक़दम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कज़ालिका उमिरू जमीउल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अन युनक्किसू रुऊसकुम लिताज़ीम लिसय्यदतिन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा व मा माना तामीदुल अबसार गुद्दू अबसारकुम मीन्स हाज़िही लिसत्रि सय्यदतिन निसा ला वाहिदुन मुजाज़ुन अन यंज़ुरा इला वजह सय्यदतुन निसा लिअन्ना सय्यदतुन निसा सुइला अन अफ़ज़लिन निसा फ़क़ालत अफ़ज़लुन निसाए मन ला यराहु अहदुन ग़ैर ज़ौजिहा हाज़िल मेयार तुक़ामु यौमुल क़यामत लिहक़्क़ि सय्यदतिन निसाए फ़ातिमतुज़ ज़हरा कमा क़ाल फ़ी दुनिया अक्सरुन निसाए मन ला यंज़ुरु इला वजहिहा ग़ैर ज़ौजिहा फ़कज़ालिका सय्यदतुन निसा अकामा हाज़िल मेयार यौमुल क़यामा ला वाहिदा मुजाज़ुन अन यंज़ुरा इला वजह सय्यदतिन निसाए फ़ातिमतुज़ ज़हरा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी शाने सय्यदाए कायनात फ़साहत व बलागत हुज़ूर क़िबला आलम हज़रत मुफ़क्किर-ए-इस्लाम विलादत सय्यदा फ़ातिमा औजबतिल जन्नत ले औलादिहा हाज़ा तख़सीसुन अन ख़सीसा ले सय्यदतिन निसा ला उम्म फ़िल आलम अल्लज़ी यलिदु वलदन व यजिबु लहुल जन्ना फ़क़त सय्यदा फ़ातिमा मन वलदहा सय्यदा फ़ातिमा फ़हुवा मिन आलिल जन्ना हुर्रिमतिल जन्नतु अलल उम्म हत्ता अदख़ुलहा अना व हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया हत्ता अदख़ुलहा अना व हुर्रिमतिल अलल उम्म हत्ता तदख़ुलहा उम्मती व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व अली व फ़ातिमा व हसन व हुसैन यदख़ुलून मुज्तमईना फ़िल जन्ना फ़ी तबक़तिन वाहिदा
नबी करीम अलैहिस्सलाम रवी फी अबू सुनन अबू दाऊद नबी करीम अलैहिस्सलाम यकूल हुनाका सबअतु रुअसा फिल जन्नह सबअतु रुअसा फिल जन्नह व कुल्लुहुम मुतलबियून अव्वलुहुम अना व सानीमा हमजा व सालिसुमा जाफिर व राबिउहुमा अली व खामिसुहुमा हसन व सादिसुहुम हुसैन व साबिउहुम इमामुल महदी। हाज़िही सबअतुन रुअसाउल जन्नह व कुल्लुहुम मुतलबियीन। हूँ थोड़ी जी तकरीर इस मजमून पर अंग्रेजी कर देना ताजे ये माड़ा साथी आ माड़ी गड्डी भी चलाने जरा हाल तो गल समझ नहीं आनी वो गल समझ नहीं आती बैठा कैसा रहना है। My beloved friends, I am going to talk about Sayyida Fatima in English language just to make you understand whatever I say. Sayyida Fatima is Sayyida fi dunya wal akhirah. In the community of women community is chaired by Sayyida Fatima in both of the world. It may be this word or the next word. And Buzurgi and dignity can be obtained on the side of, from the side of father, or from the side of mother, or from the side of the husband, or from the side of the offspring. First of all, we should check the side of father. Her father is Sayyidul Alameen, Sayyidul Malaika, Sayyidul Jannah, Sayyidul Jinn, Sayyidul Ins, Sayyidul Makhlukat, Mawjudat, or Mumkinat, who are chief of everything existing in the world. And he was Imamul Awliya. And since he was Imamul Awliya, for this very matter, the Sayyida Fatima established a typical example to be followed by the women. She is Imamul Nisa. And all of the women are duty bound to follow her in respect of Seerat, Surat, or moral and everything. Sayyida Fatima Mazra Islam ra hasil batul Madra ra uswa hasana batul. Allama Iqbal was reported to have said, he says that Janabi Sayyida Fatima is a typical example for the woman as Nabi Kareem laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Rasul Kareem is a typical example to be followed by the total world, and Sayyida Fatima is a typical example to be followed by the woman. And he was superior in respect of beauty, in respect of character, in respect of seerat, and in every respect. Similarly, Sayyida Fatima was very, very beautiful, very, very intelligent, and very, very punctual, very, very regular, and abiding by the law and rules. The thing is, she said that is a woman who has no affiliation with anybody else in the world except her husband. She proved this one. At the time of death, she requested Hazrat Qarar, please come to me. When he came to her, she said, oh Hazrat Ali Murtaza Sher Khuda, please forgive me, not as a daughter of Muhammad Mustafa, but as a maid slave of your house. And I could not pay the right of your respect. And I am a very sinful person. Therefore, I beg your pardon with keen of my heart. You are very superior person, and you contributed very well and very much to the mission of the Holy Prophet. Therefore, I think that you are a person to be asked pardon. Please redeem me. And she said, no one is allowed to give me the bath.
I shall take my bath myself. She took her bath herself and she shrouded herself by herself. And she said that no one is allowed, no woman is allowed to touch my body because no one else other than Sayyidina Ali radiallahu anhu touched my body. If a woman gave me bath, so she will touch me, and she must have touched her husband or somebody else. So with this way, the effect of a ghair mahram, a strange person will reach to my body. Therefore I shall request nobody should allow my body. And she requested my funeral prayer should be offered at my body in the night, so that nobody can say that we did not see Hazrat Sayyida Fatima in the life, but I saw her dead body while going to the janazah. Therefore you should do my funeral prayer in my house, and my mahram should offer the funeral prayer at my body. So according to our instructions, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu led the prayer of funeral over her body in the house in the night. She was buried in the night in the house, and no one else was allowed to participate in that funeral prayer. So all of the restrictions instituted by the Holy Prophet for the parda were attempted by Sayyida Fatima radiallahu ta'ala anha. So all of the Muslim ladies should follow the character of Sayyida Fatima. Bahal ay dukhtarak in dil bariha, Musalmaran zebat kafiriha. Allama Iqbal Marhum advises the Dukhtar-e-Sharq, the Muslim ladies, oh my daughters, oh my darling, don't try to show up yourself, don't show off, don't make objectionable beautification. This makeup is not your shi'ar, your symbol, your identity, but your shi'ar is taqwa, parhezgari, khuda parasti, ibadat, riyazat, khawf khuda, and obedience to your husband. Bahal ay dukhtarak in dil bariha, Musalmarana zebat kafiriha. These are the customs of the kafir. They should be avoided, not should be attempted. So this is the advice of a person who was the most intelligent person in the world level, and including the Muslims and Jews and Christians. They believe that he was a very noble person, very intelligent person. Just like Imam Abu Hanifa was one of the most intelligent person in the offspring of Adam. Similarly, Allama Iqbal Marhum was one of the most intelligent person who was born to the Awlad Adam. He says, Agar pande ze durveshe paziri, hazar ummat bamirat tu namiri. If you act upon my advice, inshallah, hazar ummat bamirat tu namiri. Thousands of communities will die away, will finish, but you will never finish. Batule basho pinha sho azim asr ke dar agosh shabbire bagiri. He says that the incident of Karbala Sharif was not a deed of Hazrat Imam Hussain, but it was pressure of Sayyida Fatima who compelled him to do like that. And after his death, he was speaking on the peak of the Lancer. He was reciting the Holy Quran. This is totally unprecedented in the previous world, in the previous ummahs. In this ummah, no one was found in the world reciting the Holy Quran on the top of lance. This credit goes to Hazrat Sayyida Fatima. This is also a creditable for Sayyida Fatima. Her father is matchless in the world, in this world, in the next world, and
her son was matchless in this world and would be matchless in the next world. Similarly, Hazrat Haidar Qarar Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu was very brave person, and his bravery and his strength was a proverbial of Arabs. Even the Jews and Christians, they would say, this is like Ali Murtada Sher Khuda radiyallahu ta'ala. But such a bravery was not found with anybody else. This credit also go to Hazrat Sayyida Fatima. When Hazrat Haidar Qarar attacked in Ahzab, Nabi Kareem, and the attack reached here on the khod, on the helmet. Helmet was split into two pieces, and then it's reached to the skull. And skull was also into two pieces, and this strike reached to the body, and body was separated into two parts. And the same attack reached to the spot of the horse. That spot was also cut into two pieces, and then it to the body of the horse, and the horse was also cut into two pieces. Nabi Kareem alayhi salatu wasalam said, Mubarazatu aliyan ma Amr Abdul, the kafir, the infidel, his name was Amr ibn Abdul. Mubarazatu aliyan ma Amr ibn Abdul khairum min amali ummati ila yawm al-qiyamah. The total virtues of total ummah can be put on the one scale, and this attack which was attempted by Hazrat Haidar Qarar should be put on one side, on one scale. Then the scale of this attempt would be preferable to the virtues of the total ummah. Look, when the Maulana people attach no importance to Hazrat Haidar Qarar, so it shows just their hypocrisy. Otherwise, this word cannot be used as the Haidar Qarar Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu. When there was a fight between Muslims and non-Muslims, and Muslims were 313 and the non-Muslim was 970. But Nabi Kareem looked around him, and Hazrat Ali radiyallahu ta'ala was a little bit short structured than the other ones. Therefore he could not be seen. Then Nabi Kareem said, Ana Aliyun. Here one can be evaluated that who is in what position. When all of the other tacticians, fighters were present there, but Nabi Kareem did not name any other person. He said, where is Ali? Ali Murtada jumped in front of Nabi Kareem. He was very happy, overjoyed. He was very happy that Nabi Kareem named me and no one else. So it is a great distinction for me for the whole of the life, for this word and for the next word visible. Badriyun are Afzaloon. Badri people, Badri Mujahideen are more preferable than the other companions. And all of the Badris are less than Hazrat Haidar Qarar, because he went in the field, and his competitor was Rustam Arab, Walid bin Utbah. He was CNC of the army. CNC of the army was father Utbah. He was a wrestler of Arab Shir, and he has attempted 22 fights, and he was winner. He was very proud, and when he saw Hazrat Haidar Qarar Sher Khuda radiyallahu, he asked him, who are you? Hazrat answered him, Ana ibn Ali ibn Talib, मैं हूँ अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा दिरगामु आजामिन वलाकिन कसुरा.
I am the same person who was named Haider by his mother, and I am in front of you. He said, please attempt first, attack first. Mawla Musa said, if I attack first, there would be no one to answer me. There is a good chance, good opportunity for you to attack me. You should attempt first, and then I shall answer. He attacked Hazrat Adre Qarar Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu. And he afforded it on the shield. And he was going to attack for a second time, but Mawla Murtaza Sher Khuda did not give him the chance. And he jumped and attacked on the neck of the enemy, the competitor. And his neck was falling on the 10th yard from the body. Body was here wriggling, and the head was there wriggling. The wriggling of the body and head, there was a dance of his body and his head. Then the people present in the field of Badr Sharif, they said, who is the person who attacked now? Then the answer was, Ana allazi sammatni ummi Haidara dirgamu ajamin mulakin kasura. The khayal time has finished. Subhanallah, Subhanallah. Takbir. Nare Risalat. Nare Haydri. 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 Nare Gausiya. आज तो बात समझ आई है ना? कहते आप तकरीर उर्दू में करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा उर्दू बोलने वाले लोगों में से है, ऐसे मुल्क में पैदा हुआ है जहाँ जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो मेरी उर्दू तुझे क्यों समझ नहीं आती? मैं बड़ी स्टांच उर्दू बोलने वाला आदमी हूँ। जब दिल्ली से पढ़ के आया था ना, तो मेरी ज़ुबान जो थी बड़ी चुस्त थी, आले ज़ुबान भी अशश कर उठते थे। अब लोगों ने मजबूर कर करके मुझे पंजाबी उर्दू बोलनी शुरू कर दी। अब इसके बाद भी अगर तुम्हें समझ ना आए तो फिर मैं क्या करूं? अब ख़त्म शरीफ के लिए कोई चीज़ लाना चाहते हो तो लाएं। ख़त्म शरीफ पढ़ लें।